So most of the students always get stuck at 5.5 in IELTS writing despite using the nice vocabulary words, good collocations, good paraphrasing, complex structures, and even spending a huge amount of money on IELTS coaching. So why is this so? To get to the solution, you need to answer few questions. So the first question says, some people say that teenage is the most happiest time of most of the people's life, while others says that adult life brings more happiness despite being the greater responsibilities. Discuss both views and give your own opinion. Now your question is, how many parts will you make in this essay? That means how many body paragraphs will you make in this essay? So you have to comment your answer in comment sections as well so that I can explain you better. So the second question says, in cities and towns, high volume of traffic is the major problem. Why is this so and what can be done? So how many parts and how many body paragraphs will you frame for this type of essay? Moving to third question and third type of essay, it says, some people believe that children should be allowed to stay at home and play until they are 6 or 7 years, while others say that attending school from an early age is much better. So what are the advantages of attending school from the very early age? So how many body paragraphs will you make in this type of essay? Do comment in the comment section below. So the next question says, is this better for children to start learning a foreign language from the primary school rather than the secondary school? Do the advantages outweigh disadvantages? How many paragraphs should this essay contain? So the last question says, people who live in big cities often face a range of problems. What are these problems and how can these problems be solved? So how many body paragraphs will you make in this type of essay? So the major problem lies in the format of your essay. You don't know how many body paragraphs should you make appropriately in order to score 7 or even 9 in your IELTS reading. Format and logical organization, these are the two biggest problems that students don't know and no one teaches you as well. So in this video, with the IDP's full guidance and instructions, I am going to explain you how many paragraphs should you make in different type of essays. And अगर आपका score 7 है and even 9 है, and if you are always stuck at 5.5, this is a must watch. Watch this video till the end. आपको बहुत कुछ learn करने को मिलेगा इस वीडियो में. तो सबसे पहले बात करते हैं agree disagree type of essay की. तो अगर आपका क्वेश्चन agree, there are two types of agree disagree. First question says, do you agree or disagree? इसमें आप कितने बॉडी पैराग्राफ फ्रेम करोगे? क्वेश्चन जो मर्जी है आपका, अगर मेन क्वेश्चन आपको बोल रहा है डू यू अग्री और डिसअग्री. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सपोज कर लो आप मेरे पास कोचिंग के लिए मेरे से इंक्वायरी कर रहे हो, तो मैं आपसे पूछूंगी आर यू इंटरेस्टेड और नॉट. या तो आप यस बोलोगे, यस मैम आई एम इंटरेस्टेड, या तो आप नो बोलोगे. ऑब्वियसली यू कांट गो पार्शियल इन दिस क्वेश्चन. So similar is the case with agree or disagree question. You have to go on one side only. That means if you are agreeing with the statement, body paragraph 1 and body paragraph 2 both will be agree only. And if you are disagreeing with the statement, BP1 and BP2 should contain only disagreement points. So this is the first main important thing. So let's understand this with the help of IDP's band descriptors. So the IDP band descriptors, the very first criteria says task achievement and task relevancy. Here we will only talk about task achievement. So what does task achievement means? Task achievements means you have clearly answered all the parts of question. अगर आपसे पूछा गया है do you agree or disagree, तो आपने agree के दोनों BPs बनाए हैं. That means you have achieved your task. You have answered all the parts of the questions and that means कि task achievement is full and full. But अगर आपने एक agree का बना दिया, एक disagree का बना दिया, this will go wrong. and इसके साथ क्या होगा, जो cohesion and coherence है that will break. and एक छोटी सी mistake की वजह से दो band descriptors में आपके bands कम आ जाएंगे. Those are task achievement and cohesion and coherence. That is why formatting the body paragraphs and framing your essay only is very important criteria. अगर आपको यही नहीं पता कितने बॉडी पैराग्राफ्स बनाने हैं एंड उसमें लिखना किस बारे में है, तो आप 7 स्कोर नहीं कर पाओगे. एंड अगर आपका टारगेट इवन 6 भी है
तभी आपके 6 बैंड्स नहीं आते, क्योंकि आप टारगेट को फॉलो नहीं करते हो। ऑब्वियसली अगर आपके 2 टारगेट्स में बैंड कम आ रहे हैं टास्क अचीवमेंट में एंड कोहेजन एंड कोहेरेंस में, हाउ कुड यू एक्सपेक्ट टू अचीव 7 और इवन 9 इन योर IELTS essay? So let's talk about the next question. So next category is, to what extent do you agree or disagree? Do you agree or disagree, and to what extent you agree or disagree are two different things, are two different questions. So अगर आपका क्वेश्चन सेज टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, इसमें क्या होता है, obviously you have to go on one side only. That means BP1 agree का आएगा, BP2 भी agree का आएगा, लेकिन you have to add on BP3 as well, which is known as counter agreement. काउंटर अग्रीमेंट मीन्स अगर आपने ऊपर एग्री का बनाए हैं तो नीचे आपका डिसअग्री का आ जाएगा, अगर ऊपर आपने डिसअग्री का बनाया है तो नीचे अग्री का आ जाएगा। दिस इज नोन एज काउंटर अग्रीमेंट अगर आपका टारगेट 7 एंड अबव है। लेकिन अगर आपका टारगेट ओनली 6 बैंड है, देन यू कैन फ्रेम ओनली 2 अग्री वाले पैराग्राफ, सो दैट इज इनफ। लेकिन अगर आपका टारगेट 7 और इवन 9 है, देन आपने क्या करना है, 2 आपके एग्री के आएंगे एंड थर्ड यू हैव टू मेक द काउंटर body paragraph as well. So this is about agree and disagree types of essay. So now let's discuss both views type of essay. If the question says discuss both views and give your own opinion, what will you write here? So in BP1 आपका आ जाएगा फर्स्ट व्यू, BP2 में आपका आ जाएगा सेकंड व्यू, एंड BP3 इसका भी बनेगा where you have to state your own opinion, where you have to give your own opinion. So if the question says discuss both views and give your own opinion, you have to make 3 body paragraphs, first view, second view and the opinion wala paragraph. So this is how discussion type essay will go. Moving on to the third type, that is, do the advantages outweigh disadvantages? Again the very important type of question. So यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं क्या advantages disadvantages से ज्यादा है? Here you have to focus on 2 main things. First is, are the advantages more or are the disadvantages more? Second thing, look for the plural. There are advantages, there are disadvantages. If you are saying yes, there are more advantages than disadvantages, then you need to write at least 3 advantages and at least 2 disadvantages to get in contact to relate your question. So in this way you can say yes, there are more advantages than disadvantages, but the trick here is that you have to make only 2 body paragraphs where BP1 will state your advantages, जहां पर आपने 3 advantages mention करने हैं, but you have to link your advantages. You can't write first advantages this, second advantages this. No, you have to add on, you have to relate your ideas, you have to link your ideas. For example, you can use which could lead to dash, which can also improve dash, which can, तो आप additionally use करके इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स को बना सकते हो। इन द सिमिलर मैनर अगर आपका डिसएडवांटेजेस 2 मेंशन करने हैं तो आप सिमिलर कनेक्टर्स यूज करके ओइंग टू दिस कैन आल्सो लीड टू दिस, आप इस तरीके से एक ही पैराग्राफ में लिंक करके यू कैन ऐड 2 और मोर आइडियाज। लेकिन आपने इस बात का भी ध्यान रखना है, यू हैव टू mention only 1 idea in 1 paragraph. But अगर आपका question, let's take an example for this question. So this question says children should be allowed to stay at home and play until they are 6 or 7. Others believe that they should be joining school at the early age of their life. So what are the advantages of attending school from the very early age? तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, simply the question is asking for the benefits of advantages of attending school from the very early age. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, शॉर्ट सा क्वेश्चन है, तो सिंपली आपने क्या करना है, एडवांटेजेस देने हैं, कोई दूसरी चीज इसमें आपकी कॉम्प्लेक्स करने वाली नहीं है। तो अगर आपका सिंगल क्वेश्चन है, एडवांटेजेस पूछ रहा है, प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, BP1 भी एडवांटेज का आ जाएगा, BP2 भी आपका एडवांटेज का आएगा, दैट्स इट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें कितने ज्यादा पार्ट्स बनेंगे, BP1 बनेगा या 2 बनेगा, एंड उसमें क्या लिखना है, एग्री करना है, एडवांटेज लिखना है, क्या लिखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज
Is it a positive or negative development? Again, this is same as do you agree or disagree. वहां पर हमने क्या किया था, दोनों आपके आएंगे अग्री के आएंगे या दोनों डिसअग्री के आएंगे. इन दिस सिमिलर मैनर यहां पर भी क्या आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव डेवलपमेंट के आएंगे या दोनों के आएंगे नेगेटिव डेवलपमेंट के आएंगे. Moving on to next, the simplest question is that what are the problems and what can be done? तो सिंपली BP1 में आपका क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम्स क्या है. अगेन प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं. यू हैव टू ऐड एटलीस्ट 2 प्रॉब्लम्स, बट आपने लिंक करने हैं आइडियाज. यू हैव टू लिंक योर आइडियाज. उसके बाद BP2 का बन जाएगा सॉल्यूशन. तो जो भी आपने प्रॉब्लम्स मेंशन की उसके रिगार्ड में ही आपने सॉल्यूशंस देने हैं. सो दिस इज हाउ आपका डिफरेंट टाइप ऑफ एसेस के कितने बीपीज बनेंगे. You have to keep this thing in your mind क्योंकि according to IDP's band descriptors, this is very important task achievement and cohesion and coherence. इससे आपका पूरे essay का एक लिंक बन जाता है जो कि very very important है for your IELTS essay. And I guarantee आपको ये चीजें कोई भी अच्छे से नहीं समझाता. आप हमेशा क्या करते हो, BP1 बना दिया, BP2 बना दिया, that's it. लेकिन आपने फॉलो कैसे करना है क्वेश्चन को, ये इस वीडियो में आप होप आपको सीखने को मिल गया होगा. सो इन माय अपकमिंग वीडियोस आई विल बी फोकसिंग मेनली ऑन राइटिंग टास्क. इन द नेक्स्ट वीडियोस आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि आपने बॉडी पैराग्राफ्स का क्या फॉर्मेट यूज करना है, हाउ टू एक्सटेंड योर बॉडी पैराग्राफ, व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट योर बॉडी पैराग्राफ्स विल बी एक्सप्लेन्ड इन माय अपकमिंग वीडियोस. And after that, I will also be explaining how to write introduction and conclusion of the writing task 2 essay. So अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, do like this video, don't forget to share it with your friends and subscribe my channel for more daily videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy and all the very very best for your IELTS exam.